Hey guys, my name is Smruti. Your coach from Smruti's Knowledge is present here with the chapter Motion, the part 2. This is the part 2 of our chapter Motion and we are learning physics. Okay guys? तो मोशन का ही वाला हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे. हम लोग पार्ट 1 में व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, ओके, और ऑफ दैट टाइप्स ऑफ मोशन की फॉन्डा मीन्स कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ चुके थे. ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज कंसेप्ट. तो आप लोगों को यदि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है और भी जानना है तो आप लोग प्रीवियस क्लास जो कि पार्ट 1 है मोशन का, हमारी चैनल को जाकर वीडियोस की लिस्ट में देख सकते हैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन की चैप्टर में. ए ब्यूटीफुल कोट फॉर यू गाइज. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. आप लोगों को ग्रेट नहीं होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए ग्रेट होने के लिए. यस गाइस, ये बहुत सा ब्यूटीफुल सा एक कोट था. लेट्स स्टार्ट टुडेज कंसेप्ट. तो हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे. ट्रांसलेटरी मोशन, that is translatory motion, the first type. It is also divided into two, that is rectilinear motion and curvilinear motion. समझ में आया? The second one is rotational motion, third one repetitive motion, fourth one oscillatory motion, the fifth one random motion. Okay, तो रिपीटेटिव मोशन हमारा और भी 2 टाइप्स के हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी. ओके, तो हम लोग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं हमारे ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में. ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, उसके भी फिर से 2 टाइप्स है ना, उसके भी 2 टाइप्स हैं. वो 2 टाइप्स के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. तो नाउ यू कैन सी दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन एज ए होल, means every part of it moves with respect to a stationary object, it is said to be in translatory motion. देखो इसका मीनिंग क्या है, पहले इतना पहले समझो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट को जाएंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे. तो जब एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर देता है एक होल के जैसे, तो एवरी पार्ट होल के जैसे पोजीशन चेंज करता है, मतलब उसका सारा पार्ट मूव करता है विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू व्हाट, ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट दैट इज स्टॉप. So that is known as translatory motion. For example, a car moving on a road. So the car, the object that is moving, that changes its position, but the road is the stationary object. Now, leaves or fruits falling from the tree. लीव्स है तो फ्रूट जो कि ट्री से मीन्स नीचे गिर जाते हैं. तो लीव्स और फ्रूट्स हैं ऑब्जेक्ट जो कि अपना पोजीशन चेंज करते, लेकिन जो ट्री है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, वो हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. नाउ बर्ड्स फ्लाइंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ. ओके, now birds are flying, they are the object that changes its position, but one tree to another tree is the stationary object. yes समझ में आया. Now translatory motion are further categorized into 2 types. How many types? Into 2 types. तो first one is rectilinear motion. The motion of an object along a straight line or path in one direction is called rectilinear or linear motion. rectilinear motion को हम लोग linear motion भी बोल सकते हैं. The motion of one object, जो ऑब्जेक्ट का मोशन, ओके, जो ट्रांसलेटरी मोशन वो एक स्ट्रेट लाइन में हो, नो कटिंग, नथिंग, दैट इज नोन
as rectilinear motion और linear motion. Rectilinear का मतलब ही होता है straight. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग जाते हो हाईवे में, हाईवे में आपकी फैमिली के साथ. मान लो कि आप लोग कार में हो, तो जो हाईवे है वो पूरा स्ट्रेट है, राइट? नो कटिंग्स, नो कर्विंग्स. तो द रोड इज स्ट्रेट एंड यू आर गोइंग इन द कार and your father or anyone is driving that who is older than you. Some old songs is playing. Okay, the whole world will be peaceful, right? But that's the rectilinear motion example, because the car is moving on a straight road, on a straight path. Another example, an athlete run on a straight track. Yes, these are some examples of rectilinear motion. Now, curvilinear motion, what are these? Curvilinear motion, when a body moves along a curved path, it is said to be in curvilinear motion. जब एक बॉडी कर्व पाथ में मूव करता है तब ये वाला कर्वलिनियर मोशन जाना जाता है. For example, a basketball thrown in a basket, a train moving on a curved track. जैसे ऐसे 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 कर्व. यस, समझ में आ गया ये वाला सारे? आ गया? ओके, तो लेट्स गो फॉरवर्ड. अब पढ़ेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन के बारे में. रोटेशनल मोशन होता क्या है? What is rotational motion? When an object moves around a fixed point, it is said to be in rotational motion. कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ भी समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका मतलब क्या है? ओके, लेट मी टू टीच यू. तो जो ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स्ड पॉइंट, लेट्स से दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट. लेट्स से दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट. ओके, वन ऑब्जेक्ट इज देयर. मान लो ये रेड कलर का है. वन ऑब्जेक्ट इज देयर दैट इज गोइंग ऑन around the fixed point. That is known as rotational motion. For example, the rotation of Earth on its axis, the revolution of Earth around the sun, the spinning of the top, they are the example. Now, in this motion, the different parts of the object move different distances in the given time. Okay, in a rotating fan, the outer portion of the blade will make a bigger circle, but the inner portion of the blade make a smaller portion. Now, rotation of Earth on its axis, revolution of Earth around the sun, and spinning of the top are some of the other examples of rotational motion. समझ में आ गया? Now, the next is repetitive motion. What is repetitive motion? And this motion is further divided into two. Okay, we will learn about that also. Okay, the next one, that is the repetitive motion. What is this? When an object repeats its motion, it is said to be in repetitive motion. जब एक ऑब्जेक्ट अपना मोशन रिपीट करता चलता है तो वो व्हाट? दैट इज रिपीटेटिव मोशन. Repetitive motion is further divided into two types. One is periodic motion. What is periodic motion? When an object repeats its motion after regular intervals of time, that's known as the periodic motion.
What is periodic motion? When an object repeats its motion after regular interval. जब एक ऑब्जेक्ट अपना मोशन रिपीट करता है एक सेम इंटरवल में, मीन्स 2 मिनट्स लिया इतना मोशन कंप्लीट करने, फिर से स्टार्ट यदि करेगा तो वही 2 मिनट्स लेगा वैसे. ओके, नाउ व्हाट इज नॉन पीरियोडिक मोशन? When an object does not repeat its motion after regular intervals. एक regular intervals के साथ वो जैसे ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करता अपना मोशन, that's known as the what? Non-periodic motion. That's known as the non-periodic motion. Now the examples of periodic motion देखते हैं. Like the motion of the hands of the clock. The motion of the hands of the clock. देखिए यदि clock है, okay, this is the middle point if or no, this is the clock, okay, this is the point. Now this goes and this goes also and repeats its motion after regular intervals. इतना hours इतना minutes के बाद फिर से, इतना hours इतना minutes के बाद फिर से. Okay, now what about the non-periodic motion? For example, the blinking of our eyelid. ऐसे ऐसे करोगे, blinking करोगे, yes, एक रेगुलर इंटरवल नहीं होता. कभी 2 सेकेंड्स के बाद, कभी 1 सेकेंड के बाद, कभी 5 सेकेंड के बाद, right? Now let's go forward to the next type. Now the next type is the oscillatory motion. The next type is the oscillatory motion. Okay, ये oscillatory motion क्या होता है? Oscillatory motion क्या होता है? Oscillatory motion क्या होता है हम लोग देखते हैं. Now let's go see that what is oscillatory motion. The to and fro motion of an object is known as oscillatory motion. एक to और fro means ऐसा गया फिर से ऐसा आएगा, ऐसा गया फिर से ऐसा आएगा, like that the to and fro motion, the to and fro motion. Some examples: the motion of a swing like this, the swing is going on, right? Now the swinging of a pendulum swinging, okay, like that. Now the random motion. What is random motion? Random motion क्या होता है? Let's see what is random motion. When an object changes its direction in an irregular manner while moving, it is said to be in the random motion. Random motion कब बोला जाता है, कब होता है? जब एक ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है कि इरेगुलर मैनर में, मीन्स एक रेगुलर नहीं, इतना इंटरवल में इतना केमी जाएगा, इतना मीटर जाएगा, नो, दैट्स नॉट इरेगुलर. कब जाएगा कैसे जाएगा हम लोग को पता ही नहीं है. नाउ द फॉर एग्जाम्पल द मोमेंट ऑफ बी. Here you can see the bee also. I have here. So here means the picture also. Okay, the flying kite. That is also irregular. That is also the random motion. Clear? So different motions at the same time. एक ही टाइम में, एक ही सेम टाइम में डिफरेंट मोशंस कैसे होते हैं? लेट्स सी. How do the different motions at the same time happens? Many times we observe 2 or more types of motion happening together at the same time. कुछ समय ऐसा भी होता है जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 2 या तो 2 से अधिक टाइप ऑफ मोशन जो कि हैपनिंग टुगेदर एट द सेम टाइम. Some examples of random motion are needle of a sewing machine oscillates whereas wheel of the sewing machine rotates. जब हमारा जो स्विंग मशीन एग्जाम्पल, तो उसका नीडल जो होता है वो ऐसे पीरियोडिक मोशन होता है, ऐसे ऐसे
तो जैसे व्हील ऑफ सीइंग मशीन, लेकिन जो व्हील होता है वो रोटेट करता है. यस. नाउ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, हियर आई हैव गिवन द पिक्चर ऑफ द अर्थ. Okay, the movement of the earth around the sun. Here I have given the picture of the sun, how cute the sun is. You can see. तो जो अर्थ का मोमेंट सन के चारों तरफ वो एक रोटेशनल मोशन है, बट इट रिपीट्स इटसेल्फ एट ए फिक्स्ड इंटरवल, सो इट इज द पीरियोडिक मोशन टू. दो होते हैं, राइट? डू यू नो मूविंग बैकवर्ड्स and forwards in a straight line known as reciprocating motion. This is another type of motion such in cutting with a saw. Moving backward, forward in a straight line, that is known as the reciprocating motion. Okay, these editings are made by me. Do you know? और एक डू यू नो, ये भी एडिटिंग मेरे से ही बना हुआ है. तो many mechanisms take one type of input motion and output as a different type of motion. You can see here that many mechanisms, one type of input motion and another type of output, that is of different type of motion. Like a rope and pulley system changes the rotatory motion to linear motion. Yes, clear? Nothing but that. Thank you for your support. Here I am writing the thank you for your support. Make me proud, make me crazy, and please do 100 subscribers by supporting me. And thank you and have a nice day. Don't forget to like, share and subscribe and press on the bell icon and comment in the comment box how was the video. Till then, bye.